Hello बच्चों, let's read this question. The question says, consider an ellipse x square by a plus y square by b equal to 1 if a1 and a2 denotes area of ellipse and its director circle respectively, then option A, a2 greater than or equal to 2a1, option B, a2 lesser than 2a1, option C, if a equal to 4b, then a1 equal to 2 by 5 a2, option D, if a equal to 4b, then a2 equal to 2 by 5 a1. अब हम यहाँ एज अ की कॉन्सेप्ट एरिया ऑफ इलिप्स एंड डायरेक्टर सर्कल का फॉर्मूला लिखेंगे. फॉर x square by a square plus y square by b square equal to 1, area of ellipse is given by pi into AB and director circle is given by x square plus y square equal to a square plus b square. Here रेडियस क्या दिया है, a square plus b square. So r square equal to a square plus b square, which implies r is equal to square root of a square plus b square. तो फिर एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द सर्कल विल बी पाई आर स्क्वायर, दैट इज पाई इंटू a square plus b square. गिवन इक्वेशन लिखते हैं x square by a plus y square by b equal to 1. एरिया ऑफ इलिप्स इसे क्वेश्चन में a1 से डिनोट किया है, विल बी इक्वल टू, अब यहाँ डिनोमिनेटर में a स्क्वायर b स्क्वायर नहीं है, a एंड b है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा फॉर्मूला होगा पाई रूट a इंटू रूट b, विच इज इक्वल टू पाई रूट ए बी. इसको इक्वेशन नंबर 1 नेम करते हैं. नाउ डायरेक्टर सर्कल देखते हैं. डायरेक्टर सर्कल विल बी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर था, लेकिन यहाँ a प्लस b आएगा. r will be equal to square root of a plus b. So area of the circle will be a2, क्वेश्चन में a2 से डिनोट किया है, pi r square which is equal to pi into a plus b. This is equation number 2. अभी हमें पता है कि arithmetic mean is always greater than geometric mean. Therefore, a plus b upon 2 will be greater than or equal to root of ab. Therefore, a plus b will be greater than or equal to 2 times of root of ab. Therefore, pi into a plus b will be greater than or equal to pi into 2 root of ab, which implies pi a plus b is greater than or equal to 2 times of pi root of ab. अब ये हमने इक्वेशन 1 एंड 2 में देखा था. pi root of ab is from equation 1 and pi a plus b is equation 2. From 1 and 2, a2 is greater than or equal to 2 times of a1. तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. अब ऑप्शन नंबर सी देखते हैं.
if A equal to 4B, so if A is equal to 4B, A1 हो जाएगा pi root of AB, that is pi root of 4B into B, which is equal to pi root of 4B square, which is equal to pi into 2B, and A2 हो जाएगा pi A plus B, which is equal to pi into 4B plus B, which is equal to pi into 5B. अब A1 upon A2 का रेशियो लेते हैं, which will be 2B pi upon 5B pi. Pi pi cancel हो जाएगा, B भी cancel हो जाएगा, it will be 2 upon 5. Therefore, A1 will be equal to 2 by 5 A2. Let's see ये कौन सा ऑप्शन है. This is option number C. So the final answer is option number A, A2 greater than or equal to 2 times of A1, and option C, if A equal to 4B, then A1 equal to 2 by 5 A2. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.